Hello students, so I'm back with another video and our today's video is on sentence rearrangement. This is again one of the important part of any competitive exam. So today we will see how can we attempt this kind of question where we are able to get maximum marks. So let's start with it. This is sentence rearrangement. First of all, rearrangement suggests that we are to rearrange certain sentences. Means certain sentences are given, but then to get a meaning out of it, we are supposed to rearrange it. Okay, so we can say a bunch of lines, separate lines, small paragraphs, okay, any form you can get where you are supposed to rearrange them so that you can get a story in a flow or you can get a message in a flow. So this is rearrangement. Okay, so your job is to arrange the things in correct order. So when we say this is sentence rearrangement, so first of all it can have 4 formats. When this question can come in 4 formats. We are not sure what format you are going to get in your exam. So you should know all the formats. So these formats are somewhere, first of all, first static statement is given. Means sometime suppose you are given, you get 4 statements. So in those 4 statements, your first statement would be static. Static here means that statement you cannot change. Means your first statement will remain the first. And then you are to arrange rest of the statements according to the, we can say, story or that flow. Second format can be where last statement is static statement. Means first 3 statements you are to arrange, but last statement will remain the last. And it will be given to you in the question that your last statement is static, your first statement is static, and then you are to arrange the rest of the statements. Then your third format can be where first and last both the statements are static. Means sometimes it is given that you are not to change the position of first statement, you are not to change the position of last statement. And in between there can be 3 statements, 2 statements, 4 statements. So whatever statements are there, those only statements you are to put in right order. But first and last statement will remain static. And sometime this is all jumbled statements you get. Means if there are, like here I have taken one example where I have taken 4 statements. And these 4 statements are all jumbled. Okay, so this is we can say fourth kind of format I have taken. So let's start with this, we can say one example so that you can get more about it. So here, this example is where I have taken 4 statements. And these 4 statements are not put according to the, we can say, sequence. So you are to put a right sequence so that the story is more clear or the message is more clear. Here our first statement is Maria Montessori began topping her class. This is first statement. Maria Montessori began topping her class. Second statement here is as a little girl she was a dull student. This is second statement. C, third statement is Maria was born in 1870. This is our third statement. And fourth statement is sudden change came at the age of 10. So these are 4 statements. One thing is clear that this is all statements, these all statements are about Maria Montessori. Okay, so this thing is clear. But when you read these all 4 statements, naturally you feel this is given in a haphazard way. Okay, there is no sequence. And that's why sometimes it is difficult to understand what they are going to tell. So now your job is to rearrange them. So now read once again. Whenever you do it, read once again. Maria Montessori began topping her class. Maria was born in 1870.
So first of all, we will see, yes, when we are talking about somebody and if date of birth is given, it should be the first line. So here we can say that yes, Maria was born in 1870. This should be the first line. Then what should be next? As a little girl, she was a dull student. Sudden change came at the age of 10. Maria Montessori began topping her class. Topping her class, and then she was a dull student. So what should be the next one? She was born in 1870. So first of all, when she was a little girl, at that time she was a dull student. Okay. And then only she began topping. So we can say after C it should be B. As a little girl, she was a dull student. Then what should be the next one? Now two are left. She was a dull student. Then what should be next? Maria Montessori began topping her class, or sudden change came at the age of 10. What should be the first thing? She was a dull student. Then we cannot directly jump to this line that she began topping. Here we will take D first. Sudden change came at the age of 10. Okay, and then A. So now what sequence we got? C, B, D, A. Now I am reading that way. So here 4 options are given. A, C, B, D, C, B, D, A, B, D, C, A, A, D, B, C. And we have already chosen this C, B, D, A. And before you write your answer, read whatever you have not decided, read according to that. Just recheck whether you are right or not. So now we are reading like this: C, B, D, A. Maria was born in 1870. As a little girl, she was a dull student. Sudden change came at the age of 10. Maria Montessori began topping her class. So this way now we got the sense that she was born in this age, in this year. Then up to this age, means when she was very small, she was dull. Up to this age, she was dull, and then at this point of age, change came, and then she started topping the class. So this way you got correct answer C, B, D, A. Now we take another example where it's not only one single sentence like this. Sometimes you get small passages, small paragraphs, sorry. Dr. Bresley opened an experimental state school for disabled children with Dr. Maria as its head. I have taken the same sequence so that it's easy for you to understand. So now here I have taken small paragraphs. Dr. Bresley opened an experimental state school for disabled children with Dr. Maria as its head. Maria used to spend long hours with children, observing and finding out what she could do. This is one thing, that she was made the head of some school and now she started searching for what she could do for these children. Second paragraph is, Maria became the first Italian woman to receive a medical degree. As a doctor, she joined the university's psychiatric clinic. There, she got an urge to do something for children with special needs. And third, in her colorful and stimulating kindergarten, she provided the children with innovative learning objects like cut-out letters of sandpaper, colored blocks, and musical bells. Her system of education even inspired the educationist. And the fourth paragraph, after 7 years as a professor of anthropology, she took up another important mission of her life. She started a kindergarten for the poor normal children. Now, it is very, we can say, natural that when you read for the first time, you do not understand. So, read once again so that you understand what is given in these 4 paragraphs. So, first is Dr. Bresley opened an experimental state school for disabled children with Dr. Maria as its head. Okay, so this school was opened. Maria used to spend long hours with children, observing and finding out what she could do. This doctor, he opened one experimental state school
where Maria was taken as head, and now she started spending more time in school, finding out, searching, or trying to do something for the disabled children. So this is first thing given. Then Maria became the first Italian woman to receive a medical degree. As a doctor, she joined the university's psychiatric clinic. There she got an urge to do something for children with the special needs. Here it is given that Maria was the first lady in Italy to get medical degree or to become a doctor. And then as a doctor, he started working as a professor, as a doctor in university's psychiatric clinic. And then there only she got an urge to do something for the children with special needs. Then third paragraph. In a colorful and stimulating kindergarten, it shows this, from here only we get to know, यहाँ से हमें ये पता चला कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उसने किंडरगार्टन शुरू किया था. किंडरगार्टन स्मॉल स्कूल, नर्सरी स्कूल, सो जहाँ पर प्ले स्कूल काइंड ऑफ स्कूल. सो उसने किंडरगार्टन शुरू किया होगा, तभी यहाँ पर ये पैराग्राफ है कि उसके उस कलरफुल स्कूल में उसने काम करना शुरू किया. शी प्रोवाइडेड द चिल्ड्रन विद इनोवेटिव लर्निंग ऑब्जेक्ट्स लाइक कट आउट लेटर्स ऑफ सैंड पेपर्स, कलर्ड ब्लॉक्स एंड म्यूजिकल बेल्स. उसने इनोवेटिव तरीके से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, कलरफुल चीजें लाई ताकि बच्चे अट्रैक्ट हो, उनको थोड़ा स्टिमुलेशन मिले. सो इस तरह से उसने अपने इस किंडरगार्टन स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. हर सिस्टम ऑफ एजुकेशन इवन इंस्पायर्ड द एजुकेशनिस्ट. सो उसका ये सिस्टम उस टाइम इतना नया था कि किसी को भी आइडिया नहीं था कि बच्चों को इस तरह से भी पढ़ाया जा सकता है, और इसलिए एजुकेशनिस्ट भी उससे इम्प्रेस हुए थे. And last is, after 7 years as a professor of anthropology, naturally प्रोफेसर है एंथ्रोपोलॉजी, जब उसने डॉक्टरेट कर लिया और उसने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया एज ए साइकेट्रिक क्लिनिक में एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेसर, और उसके बाद उसने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाई. देन शी टुक अप अनदर इम्पॉर्टेंट मिशन ऑफ हर लाइफ. शी स्टार्टेड अ किंडरगार्टन फॉर द पुअर नॉर्मल चिल्ड्रन. अब यहाँ पर है किंडरगार्टन में क्या क्या हुआ, और ये है किंडरगार्टन स्टार्ट किया. ये तो चीज हमें समझ आ गई कि डी पहले आएगा और सी बाद में आ सकता है, क्योंकि पहले वो स्कूल शुरू करेगी किंडरगार्टन, फिर किंडरगार्टन स्कूल के बारे में बताया जाएगा. तो डी पहले सी बाद में. एक तरीका ये भी है कि क्या डी पहले सी बाद में कितने में दिया हुआ है, जहां पर हम ये कहें डी पहले सी बाद में, मीन्स ये डी पहले सी बाद में, एक तो ये है, फिर उसके बाद डी पहले सी बाद में एक ये. इट मीन्स थर्ड और फर्स्ट में चांसेस हैं कि हमारा इसी का कोई सीक्वेंस बनेगा, क्योंकि ये तो हमें यहां से समझ आ गया कि डी पहले आना चाहिए, सी बाद में आना चाहिए. अब इसमें डी से पहले ए दिया हुआ है और इसमें डी से पहले ए है, लेकिन ए से पहले बी है. अब ये ध्यान रखना कि दोनों में ही डी से पहले तो ए ही है, और ए क्या था, डॉक्टर ब्रेसली ओपन एन एक्सपेरिमेंटल स्टेज स्कूल. ओके, इसके अकॉर्डिंगली तो पहली ही स्टेटमेंट पहली बननी ही चाहिए, ए रहनी चाहिए. अब हमें ए और बी में ही देखना है, ये तो हमारा क्लियर है कि कहाँ आना है. ए और बी में देखिए इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट हमें लगता है कि पहले लेना चाहिए. डॉक्टर ब्रेसली ओपन एन एक्सपेरिमेंटल स्टेज स्कूल, ये पहले आना चाहिए, या फिर मारिया बिकेम द फर्स्ट इटालियन वुमेन टू रिसीव अ मेडिकल डिग्री, क्या पहले आना चाहिए. तो हमें इन दोनों को पढ़ के भी लगेगा कि नहीं, पहले ये आएगा जब वो डॉक्टर बनी, डॉक्टर की उसको डिग्री मिली, और उसके बाद ही नेचुरली एज ए डॉक्टर बनने के बाद ही उसने बच्चों के लिए काम करना शुरू किया. क्लिनिकल साइकेट्रिक क्लिनिक में गई, वहाँ स्पेशल नीड्स के बच्चों को देखा, और उसके बाद जो है उसने काम करना चाहा, और उसके बाद उसको जो है डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए हेड बनाया गया. जब वो पहले डॉक्टर बन गई तभी उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, और डिसेबल्ड चिल्ड्रन का जो स्कूल था उसको हेड बनाया गया. तो अब हमें यहाँ ये भी क्लियर हो गया. तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन करना है तो आपको पहले तो उन चारों को सेपरेटली समझो, फिर उनका कनेक्शन देखो कि कैसे कनेक्शन बैठता है. ठीक है, तो इट मीन्स हमारा ये आंसर ठीक है कि सबसे पहले हम बी ले रहे हैं, जहां पर हम ये कहेंगे कि उसको वो फर्स्ट डॉक्टर बनी इटली की. ठीक है, और उसके बाद जो है उसने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, साइकेट्रिक क्लिनिक उसने वहां ज्वाइन किया, और वहां पर उसने जब काम करना शुरू किया तब उसको लगा कि उसके स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हैं. ये पहला. फिर स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी, इसीलिए ब्रेसले ने उसको हेड बना दिया एक स्कूल का कि आप यहाँ काम करो, और वहां उसने
बहुत टाइम बिताना शुरू किया बच्चों के साथ ताकि वो समझ पाए कि उनके लिए क्या किया जा सकता है। ये फिर हमारा बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा, और ये तो हमें समझ आ ही गया था कि पहले डी आना, क्योंकि जब उसने एज ए हेड काम करना शुरू किया, उसके बाद 7 इयर्स के बाद वो एंथ्रोपोलॉजी की प्रोफेसर बनी, उसने 7 इयर्स के बाद फिर अपना एक स्कूल शुरू किया किंडरगार्टन, और किंडरगार्टन में क्या क्या किया वो हमारा सी में है। सो इस तरह से हमें समझ आ गया कि हमारा BADC इज द करेक्ट सीक्वेंस। सो आपको यही इसी तरह से इनको पढ़ना होगा, पहले उसको समझो, फिर उसका कनेक्शन बनाओ, लेकिन फिर भी फाइनल आंसर लिखने से पहले एक बार फिर देख लो कि जो आपने कनेक्टिविटी बनाई है क्या वो फ्लो में है कि नहीं। मैं अब इसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, एक ट्रिक्स टिप्स दिमाग में रखो कि इसको कैसे करना चाहिए ताकि हमारे इस क्वेश्चन में मिस्टेक्स कम से कम हो और मार्क्स हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। सो नाउ फॉर दिस सेंटेंस रीअरेंजमेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो आप दिमाग में रखो तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीड ऑल द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड एनालाइज अ कॉमन पॉइंट। जब आप सारी स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हो उसको बहुत केयरफुली पढ़ो और उसमें कोई कॉमन पॉइंट ढूंढो कि किसके बारे में बात हो रही है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने समझ गए कि हमें मारिया मॉन्टेसरी के बारे में बात हो रही है, शी इज द कॉमन लिंक, सारा कुछ उसी के बारे में लिखा गया। तो ये कॉमन लिंक सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करो, तभी आपकी कनेक्टिविटी बनेगी। देन ट्राई टू फोकस ऑन कनेक्टिंग वर्ड्स लाइक बट, येट, लेटर, एनीवे, देन, व्हेन, एक्सेट्रा। कभी कभी ये आपको बहुत जल्दी हेल्प करते हैं ये बताने में कि किसके साथ क्या कनेक्शन होना चाहिए। दिया तो डिफरेंट पैराग्राफ में होगा, लेकिन अगर कोई पैराग्राफ आपका शुरू हो रहा है बट से या येट से या लेटर से, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये किसके बाद लगनी चाहिए थी लाइन। येट बट किसके साथ होना चाहिए था, किस लाइन के बाद आना चाहिए था। तो जिस लाइन के बाद आना चाहिए था आपको पता चल जाएगा वो पैराग्राफ एटलीस्ट इससे पहले आएगा। सो इस तरह से आपको ये वर्ड्स हेल्प करते हैं। Then once you understand all the statements, try to form a connection of the points. अब सब आपने सेपरेटली समझ लिया, अब इसमें कनेक्शन बनाने की कोशिश करो कि हमारी मारिया मॉन्टेसरी एज ए डॉक्टर उसके बारे में दिया हुआ है और उसने फिर क्या किया। उसने सबसे पहले डॉक्टरेट लिया, उसके बाद उसने डिसेबल्ड चिल्ड्रन के साथ साइकेट्रिक क्लिनिक में काम करना शुरू किया। वहां काम करते करते उसको लगा कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए थोड़ा सा और मुझे सोचना चाहिए, करना चाहिए, इनके बारे में जानना चाहिए। शायद इसीलिए उसको एक मौका मिला, हेड बना दिया गया कि कहा अब आप काम करो, एंड देन शी स्टार्टेड वर्किंग। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते अब उसको लगा कि नहीं, अब मुझे अपना किंडरगार्टन स्टार्ट करना है, मैं सेपरेटली अपनी तरह से बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ अपने हिसाब से। देन शी स्टार्टेड दैट किंडरगार्टन मॉन्टेसरी स्कूल, और उसके बाद फिर किंडरगार्टन के बारे में दिया कि किंडरगार्टन में ऐसा नया क्या था। सो ये आपको इस तरह से आप कनेक्शन ढूंढो उसके पॉइंट्स, एंड देन रीड द स्टेटमेंट्स इन अ फ्लो बिफोर गिविंग द फाइनल आंसर। ये बहुत जरूरी है। आपको पता चल गया, बहुत खुश हो कि यस मुझे सबसे समझ आ गया, बहुत जल्दी समझ आ गया कि क्या क्या कनेक्टिविटी है, कौन सा आंसर करेक्ट है, बट फिर भी उसको फाइनल करने से पहले आप उसी फ्लो में एक बार दोबारा पढ़ लो। आपका फ्लो अगर ब्रेक हुआ तो दोबारा आपको देखना पड़ेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। अदरवाइज अगर आपका आंसर सच में करेक्ट है तो आप उस फ्लो में बहुत जल्दी समझ जाओगे, पढ़ लोगे। इन अ सिंगल ब्रेथ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। आई होप विद दीज पॉइंट्स इफ यू ट्राई टू प्रैक्टिस, ये सारे दिमाग में रखो, फिर प्रैक्टिस करो इस तरह के क्वेश्चंस की, तो बहुत जल्दी आपकी मास्टरी हो जाएगी और बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। आई होप this video you would like, and please again my request is subscribe this video. Don't only just watch whenever it is in front of you. Just subscribe my channel, tell your friends also to subscribe it, क्योंकि सिर्फ यही नहीं है, बहुत तरह का ग्रामर आपको उसमें मिलेगा जो आपको लाइफ में कभी भी काम आ सकता है। थैंक यू।